Hello dear students, welcome back to your English grammar classes. In today's class, we are going to start with a new chapter that is nouns, and in nouns we are going to deal with possession. So bachcho, look at the following sentences. This puppy belongs to Mohit, and in the second sentence we have written this is Mohit's puppy. So बच्चों यहाँ पे आप लोग देखो कि हमने एक अपोस्ट्रोफी का यूज किया है. बच्चों इस साइन को हम लोग अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. So बच्चों in the second sentence we have used apostrophe. Now let's read the second sentence. This book belongs to Mansi. And again in the second part we have used this is Mansi's book. Again we have used apostrophe. Now the dress belongs to Saima is red in color. So we have written it as Saima's dress is red in color. So bachcho, in all the sentences given above, in the second sentences of each set, we have used apostrophe. So bachcho, isko hum kya bolte hai? Apostrophe. To show possession or belongingness. So bachcho, हम लोग अपोस्ट्रोफी का यूज कब करते हैं? जब हमको ये शो करना होता है कि ये किसी का पोजेशन है या ये किसी का बिलोंगिंग है. ठीक है बच्चों. नाउ अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो बिलोंगिंगनेस और पोजेशन. नाउ we use s with apostrophe with the nouns not ending with s. We use only apostrophe with the nouns ending with s. So बच्चों we use s apostrophe with the nouns जो कि s से end नहीं हो रहे होते, and we use apostrophe only with the nouns ending with s. Now we have to see few more examples. So बच्चों we have first sentence that is bag of Amit, and we have written it as Amit's bag. ठीक है बच्चों. Now nail of Ishika. So we have written it as Ishika's nail. Ball of Rohan. So we have written it as Rohan's ball. TV of Anu. So we have written it as Anu's TV. Boys' shoes. So we have written it boys apostrophe shoes. We have written it as boys apostrophe शूज. अब बच्चों हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास बॉयज के अंदर अपोस्ट्रोफी एस ऑलरेडी यूज हो रहा था. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट एज बॉय वाई एस एंड इन द लास्ट वी हैव यूज्ड अपोस्ट्रोफी. सो बच्चों जब भी हमको ऐसा लिखा हुआ आए अपोस्ट्रोफी एस, उसको हमको कन्वर्ट करना होता है वाई एस अपोस्ट्रोफी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. Here also we have written cats. So बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास क्या है एंडिंग में? apostrophe and then s. So हम इसको कैसे लिखेंगे? We are going to write s and then in the last we will use apostrophe. Now last we have girls. बच्चों यहाँ पे भी क्या किया गया है? यहाँ पे हमारे पास apostrophe and then s लिखा हुआ है, बट अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? We will just write s and then in the last we will use apostrophe. So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सबको ये chapter समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.